નર્મદા જિલ્લામાં એકતાનગર ખાતે આવેલા સરદાર પટેલ ઝૂઓલોજી પાર્ક જંગલ સફારીમાં દેશી અને વિદેશી 1500થી વધુ પક્ષીઓ આવેલા છે। જંગલ સફારી 375 એકરમાં ફેલાયેલું છે। હાલમાં નર્મદા જિલ્લાનું તાપમાન 35 થી 40 ડિગ્રી તાપમાન રહે છે। ત્યારે ઝૂઓલોજી પાર્કમાં વિદેશી પ્રાણીઓની ગરમીથી બચાવવા ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર ખાતે આવેલા સરદાર પટેલ ઝૂઓલોજી પાર્ક જંગલ સફારીમાં રહેતા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને ગરમીથી બચવા મેનેજમેન્ટ તરફથી એસી કુલર વોટર સ્પ્રિંકલર ફુવારાનો ઉપયોગ કરીને પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે। હાલમાં નર્મદા જિલ્લાનું 35 થી 40 ડિગ્રી તાપમાન છે। પશુ પક્ષીઓના ડોમમાં પાણીના કુંડ બનાવ્યા છે। સતત પાણી છંટકાવ કરતું રહે છે। આ ફુવારા મૂકવામાં આવ્યા છે એટલે ઠંડા પાણીથી વાતાવરણમાં ભેજ જળવાઈ રહે છે અને પ્રાણીઓને ગરમી ના લાગે। એટલું જ નહીં, ઉનાળામાં ખાસ पानीदारों फलों और जेमा पण ठंडा पदार्थों आपवामां आवी रह्या छे। मैनेजमेंट एक्शन प्लान लागू किया गया है, जिसके तहत जो वेदर कंड्यूसिव मतलब वेदर के हिसाब से जानवरों को ज़्यादा गर्मी ना लगे, उसके लिए उनको पुआल बिछाया गया है, स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। कुछ कुछ बाड़ों में जैसे आपका लामा अल्पाका है, वहाँ पे हमने एसीज प्रोवाइड किया हुआ है। डिजर्ट कूलर हर कार्निवोर एग्जिबिट में लग गया है। तो इससे हम लोग ठंडक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि एनिमल्स ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, उनको कोई गर्मी से दिक्कत ना हो। साथ में जितने भी हमारे फल हैं, जो गर्मियों के फल हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये खूब मात्रा में हम बंदरों को खिला रहे हैं। प्लस कार्निवोर्स में भी क्या कर रहे हैं, तरबूज के अंदर मीट दे के उनको दे रहे हैं, जिससे कि उनको उस तरह से एनरिचमेंट भी हो जाए और पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए। साथ में जो आइस के क्यूबिकल्स हैं, बर्फ का गोला, उसके अंदर मीट रख के हम लोग दे रहे हैं, तो वो ठंडक भी दे रहा है, खिलने के लिए भी टाइम हो रहा है, प्लस एनिमल खुश है। અમે મુંબઈથી આવ્યા છે, બોરીવલીમાં રહે છે। અમને બહુ જ સારી વ્યવસ્થા લાગી। અહીંયા એટલું ચાલવું પણ ન પડ્યું અને એટલા મસ્ત વ્હાઈટ લાયન દેખાણા, 2 ટાઈગર દેખાણા। એક તો આફ્રિકન જંગલી બિલ્લી તો બહુ જ ક્યુટ હતી, એવી તો પહેલી વાર જોઈ। બર્ડ સેન્ચ્યુરી પણ બહુ જ સરસ બનાવી છે અને કેટલા જાત જાતના સ્નેક જોયા। એક વસ્તુ છે કે સ્વચ્છ ભારત જે આપણે કહે છે, અહીંયા બધું જ સ્વચ્છ છે, જરાય અમને કચરો ન દેખાણો। બહુ જ ગમ્યું, વ્યવસ્થા બહુ જ સારી છે। આટલો તડકો છે તો પણ મજા આવી અમને, बहुत सारे। हम बड़वानी एमपी से आए हैं। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे भी नर्मदा रिवर बहती है। हमको यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी और यहाँ जानवरों के लिए जो व्यवस्था है वो भी हमको अच्छी लगी। हमने यहाँ के अलावा दूसरी जगह के भी चिड़ियाघर देखे हैं, पर यहाँ पर मुझे व्यवस्था ज़्यादा अच्छी लगी। गर्मी तो बहुत है, पर यहाँ ठंडा पानी पीने के लिए भी व्यवस्था है और यहाँ पर छाँव में बचने के लिए भी, खड़े रहने के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है और हमको ये जंगल सफारी बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत बढ़िया, फव्वारे वगैरह सब बहुत अच्छे लगे हुए हैं और यहाँ प्राणियों को जो रख रखा वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र से छत्रपति संभाजी नगर और ये नागपुर से आए हैं। इतने टेम्परेचर में भी हमको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिक वैन है और नीचे इलेक्ट्रिक बसेस है, इससे पूरी सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो हमने जो पक्षियों का देखे ना, वहाँ पे हर पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था की है, उनके खाने की व्यवस्था की है। पूरे जो प्राणी है उनके लिए भी पानी की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है। इतनी धूप होने की वजह से भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ। हालમાં નર્મદા જિલ્લાનું તાપમાન 35 થી 40 ડિગ્રી તાપમાન છે। સમર પ્લાનના હિસાબે પ્રાણીઓના અને પક્ષીઓના ગરમીને લાગે એ માટે પાણીના છંટકાવ માટે ફુવારા, સ્પ્રિંકલર સહિત ફૂલર એસી લગાવી દીધા છે અને હાલ આટલી ગરમીમાં પણ તાપમાન પ્રાણીઓને અનુકૂળ વાતાવરણ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।